यस गाइस दोस्तों, आज मैं दे रहा हूँ क्या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस. Inverse circular functions or inverse trigonometric functions both are same thing. Reason is when trigonometric functions are measured in terms of circle or they are measured in circular functions, that means in radians, that is known as circular functions. So trigonometric inverse trigonometric functions I am talking about today. Okay, so आज की डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो दीज क्वेश्चंस मैंने लिए हुए ये क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज पर. इन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने के बाद में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आई मीन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स विल बी क्लियर. आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन उन पर बेस कैसे आते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर जिससे कि बेसिक्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चन बेस्ड समझ में आ जाए अच्छी तरह से. इस तरह से ये क्वेश्चन समझेंगे, इनको वेरीफाई करने के बाद आप समझोगे कि यस वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग. ओके, सो इसके बारे में जरा क्वेश्चंस करते हैं एक के बाद एक. मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिटर्न ले लिए हैं. व्हाट इज एन इनवर्स फंक्शन और सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं ये डिफाइन करूंगा. सेकंड क्वेश्चन, what are the general and principal values of inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions क्या उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, क्या उनकी जनरल वैल्यूज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, और उनका डोमेन रेंज क्या है, ये सभी डिस्कस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में कंपैरिजन अगर करें डोमेन रेंज डोमेन, तो आप डिस्कस करें तो आप समझ में आएगा कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या डोमेन किसका क्या डोमेन होता है, कब रेंज क्या होती है, कि और वाइस वर्सा दे है. एक डोमेन जैसे इनवर्स फंक्शंस का जो डोमेन है वो उसकी रेंज होती है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन है वो रेंज होती है इनवर्स फंक्शंस की. तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन. अच्छा, देन थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू डिफाइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफिकल. ओके, डिस्कशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अनदर इनवर्स फंक्शन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. हाउ टू एक्सप्रेस वन इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिफ्थ वन, तो अप टू 5 क्वेश्चंस, आई मीन फर्स्ट टू 5 ये द बेसिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स रिगार्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसके बाद में ये क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं प्रॉपर्टीज इवन इन द फिफ्थ वन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. फोर्थ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस. प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स और 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें सभी क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं. ओके, वो क्वेश्चंस. देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दो प्रॉपर्टीज. सॉरी, we have discussed today. I'm very much tired, but even then let me take all the questions. Okay, हिंदी में हम डिस्कस कर रहे हैं इसको. मैं बार बार चेंज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हिंदी में डिस्कस करने के लिए, तो मैं हिंदी में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ. अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में निकल जाता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस तरह से उसको समझना. अच्छा, चलिए क्वेश्चंस करते हैं एक के बाद एक, उसके बाद में समझ में आएगा आपको. सबसे पहली डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन में है what is inverse trigonometric function or what is an inverse function. Inverse function क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या है. What is an inverse function? What is an inverse function? क्या होता है इनवर्स फंक्शन. इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें. What is an inverse function? First one, suppose there is a function. If, let me write here, if there is a function from one group of values to another, that is, let me take f is a function from, let me take x to y.
or a to b. We can take here we are taking variables x to y. That means this implies that y equal to fx. Y is equal to fx function of x. Y is a function of x. Okay, so this implies that this is the first equation. Then another function okay, y, another function, let me take g, another function g from set y to set g, set x is defined as, suppose g is a function from y to x. In this case, what is x equal to? Here x equal to gy. That means that x is a function of y here, or x is a function of y here. Okay. In this case, here this x belongs to capital X, small y belongs to capital Y. Okay. Now, if I find inverse of g, for example, okay, or inverse of f, you may say f inverse equal to, or g equal to f inverse. Okay. Or if I find out what is inverse of f, inverse of function f is equal to g inverse. Okay, because f is, we are talking about g inverse here, or g equal to, then inverse of g, then inverse of g, okay, inverse of g is equal to f inverse. Okay, both are inverse of each other. F equal to g inverse and g equal to f inverse. And what is inverse of here g equal to f inverse? And what is inverse of g? Then g inverse equal to, let me write, then g inverse equal to f inverse whole inverse. F inverse whole inverse, this is equal to f only. Therefore g inverse equal to f. Okay, so that means g inverse equal to f inverse, because inverse of g is f inverse. But this is g inverse, put this minus inverse sign, so this is above it whole, there is inverse sign. Inverse means 1 f, like this is equal to whole f. Inverse of inverse is the function itself. This is the inverse function. Okay, so inverse of this function. Now, how do we define? Let me take trigonometric function in this case. How do we define the trigonometric functions? Okay, what are their inverse functions? Okay, so this is the basic definition of inverse functions. So let me take what are the inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions वो क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने वो डेफिनेशन थी, प्रॉपर डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं, x टू y और y टू x, बोथ आर 1 1 ऑन 2, तभी इनवर्स हो सकता है। ये हमने डिस्कस कई बार किया हुआ है कि इनवर्स फंक्शन हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी हो सकता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। इस सेट की थ्योरी में हम पढ़ाएंगे, that is known as set theory. Okay, so in case of set theory or set, how to define a set? Set is a collection of well-defined objects. Okay? That we will discuss about in case of set discussion. Okay, so it's a set of values, okay, which are well-defined. In this case, this is 1 1 on 2 function. If a function is 1 1 on 2, then its inverse is possible. Otherwise, inverse may be many. But it is not 1 1 on 2, it is 1 to many or many to 1. Then inverse is not possible. It must be, the set must be 1 1 on 2.
there is only one image of that function. That image is having one domain here, or a domain range domain, which are inverse of each other. Okay, inverse trigonometric functions if I define, if let me take x equal to sine theta, then how inverse function is defined? Then inverse of sine is written as, इस तरह से इसको राइट करते हैं. देखिए जैसे साइन इनवर्स आप एक माइनस साइन लगाते हैं, ये -1 पावर, फिर साइन इनवर्स इस साइन को आप इधर लाते हैं और एंगल आप एक्स बना देते हैं. तो एंगल नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि अभी इक्वल टू थीटा यहाँ जाता है. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा हियर, और साइन इज a function of theta means angle is theta here. Even at this moment theta is expressed in terms of angles and x is in terms of values, numerical values. For example, sin 90 degree is 1, this is 1 minus 1 is minus pi by 2. Okay, then theta is minus pi by 2 because sin inverse -1 is equal to minus pi by 2. We define here, if I put here sin 1, x is 1 here, and this is pi by 2. Theta is pi by 2. Here we substitute theta is pi by 2, then sine, if we write here sin pi by 2, that is equal to 1, x equal to 1. In that situation, x is 1, that means theta is pi by 2. Similarly, if sine inverse is -1, then it is equal to minus pi by 2. In this way, these values of, or may say, the values of sine inverse, they are in numerical terms. The total result of this will be in angles. Theta is expressed in angles, but here x will be in terms of numerical values, whatever value of that angle comes in sine, normally sine. This is trigonometric function, and this is inverse trigonometric function expressed like this. Okay, so this is sine inverse we have defined. Similarly, other trigonometric functions, which are 6 trigonometric functions, we know कौन से होते हैं. जैसे cosec theta is equal to x, that we take. Therefore, cosec inverse x equal to theta. In this way, theta equal to cosec inverse x, defined like this. Or and that we take cos x equal to, or cos theta is equal to x, then cos inverse x equal to theta. Similarly, this implies that, or this implies that if cosec theta equal to x, then cosec inverse equal to, similarly other trigonometric functions. जैसे secant, now let me take secant inverse x equal to theta can be, this is secant inverse x, pronounced as sec inverse x, or sec arc x, sec of arc x we define like, but mostly sec inverse x is okay pronounced. It is pronounced as, इससे प्रोनाउंस करते हैं sin inverse x, cos inverse x, okay, cosec inverse x. Similarly, cot inverse x suppose equal to theta, you can take theta. Okay, cot inverse x, then tan inverse x equal to theta, or phi, any other, it can be taken as phi also. Let me take, this is phi, this is gamma, let me take gamma here, it can be taken as alpha, no problem. Can be taken as beta, whatever. Okay, the resultant may be any. So here the other trigonometric inverse functions, ये other trigonometric functions हैं, जैसे sin inverse, secant inverse x, cot inverse x, tan inverse x, cos inverse x, cosec inverse x, sin inverse x भी defined. इस तरह से आप trigonometric functions के inverse को लिखते हैं, उनको define करते हैं, उनकी values को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या वैल्यूज निकालते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए. अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं. तो क्या है क्वेश्चन सेकंड, कहता है व्हाट आर द जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अच्छा, जब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए, ओके, हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यूज होती है, sin theta, let me take
अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ये द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस and then we will define what are the inverse and inverse trigonometric functions. दोनों में डिस्कशन करते हैं inverse trigonometric functions, दोनों के जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, वो डिस्कस करते देखिए। सबसे पहले अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन दिस इज फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन, साइन में क्या क्या वैल्यू होती है, इसका डोमेन अगर आप देखते हैं, डोमेन मीन्स साइन एक्स, सपोज एक्स इज what can be the values for this sign, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम एक्स की जगह पर एंगल की जगह पर एंगल्स रखेंगे -5/2, 5/2 ये वैल्यू हो सकती है, और वैल्यू भी हो सकती है। इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच है, और जब ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल वैल्यू है ये, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ये सिंपल साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी रेंज क्या आपको होगी, रेंज ऑफ दिस रेंज आप देखें, इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो -1 सकती है +1, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू साइन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1। ये इसकी रेंज है। रिजल्टेंट इसका रेंज क्या है, साइन π/2, साइन -π/2 -1, ये दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज साइन की होगी। अब इनवर्स फंक्शन जब निकालेंगे नेचुरली ये उसका डोमेन होगा, ये इसकी रेंज होगी। इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस आर टेकन हियर, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या होगा, लेट मी टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर, डोमेन और यहाँ रेंज। जस्ट अ रिवर्स ऑफ दिस इज -1 and 1 डोमेन in case of inverse trigonometric function। तो inverse trigonometric function के केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा trigonometric functions, डोमेन -1 1, और फिर देखा तो रेंज डोमेन होगी, और ये जो डोमेन था ये इसकी रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2, ये इसकी रेंज होती है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। जो हम डोमेन अभी कर रहे थे, डोमेन यहाँ रेंज हो जाता है, और जो रेंज थी वो इसका डोमेन हो जाता है इनवर्स फंक्शन। दोनों में ये द प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है डोमेन के केस। सिमिलरली यहाँ पर ये प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 +π/2। आप देखेंगे वाई दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, बिकॉज इन दोनों वैल्यूज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसके बीच में और एंगल्स हो सकते हैं। Here are the general values. What can be the values for sine? The sine के केस में -3π/2 to -π/2 हो सकता है। This is one of the general value in case of sine. Sine angles can be these negative values, sine में लेते हैं -1, this is also -1, और this is in which angle we have to just define it. We discuss about this। और दूसरी बात करते हैं, इसके बाद में -π/2 to π/2 हो जाए, then π/2 3π/2, all these values may be there, number of other values, this is the generalization of all the values, these are the general values, इनको हम जनरल वैल्यूज बोलते हैं। इनमें से जो मेन वैल्यू है -π/2 +π/2 प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल के ऊपर वैल्यूज, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यूज, जैसे प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यूज -π/2 +π/2 क्लास 1 में यहाँ हमने लिया -π/2 +π/2, यहाँ ये रेंज है, इस केस में ये डोमेन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के केस में, और -1 +1 डोमेन इस केस में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, और यहाँ पर ये रेंज है -1 to +1। तो प्रिंसिपल मेन ब्रांच ये एंगल्स के बारे में हम करते हैं। इसमें से ये वाली जो ब्रांच है -π/2 +π/2 साइन के केस में, साइन थीटा और साइन फंक्शन के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। सिमिलरली
अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें भी प्रिंसिपल मेन ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उनमें से भी बहुत सारी जनरलाइजेशन नंबर ऑफ ग्रुप्स कैन बी देयर, बट वी टेक वन सिंपल branch in which the value of that function is maximum and minimum, and उसमें वेरी कर सकती है मैक्सिमम। इसलिए साइन के केस में ये मैक्सिमम है। तो ये हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये प्रिंसिपल ब्रांच है डोमेन, ये रेंज में प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी। कॉस के बारे में बात करते हैं सेकंड, फिर सेकंड पार्ट ये कॉस और कोसाइन। कोसाइन में भी डोमेन इसका क्या हो सकता है, 0 to पाई। इसका डोमेन 0 to पाई हो सकता है। 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, पाई पर -1 होती है। कॉस के केस में इसका रेंज क्या हो सकता है, यहाँ भी -1 to +1 रेंज में, तो रिजल्टेंट 0 पर 1 होती है, पाई पर -1 होती है। कॉस के केस कॉस पाई इज -1, cos 0 is 1, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी यही हो सकती है। प्रिंसिपल ब्रांच ये हो गई 0 to पाई, और वैल्यू हो सकती है पाई टू पाई, राइट, -पाई to 0, -2 पाई to -पाई। अदर ब्रांचेज आर अदर ग्रुप ऑफ वैल्यूज आर देयर, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस 0 to पाई in case of simple trigonometric function. In case of inverse trigonometric function, the inverse trigonometric functions we have taken here domain and range of that. Okay, both हम डिफाइन किए, देखिए। और इसको मैं थोड़ा सा इधर ब्रीफ करती हूँ। रेंज, लेट मी राइट हियर, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, यहाँ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहे हैं, लेट मी टेक प्रॉपर्ली। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑलराइट। अब जब देखिए यहाँ भी इसका डोमेन और ये रेंज, दोनों में प्रिंसिपल वैल्यू मोस्टली हम डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डोमेन के केस में, रेंज के केस में, उस केस में रेंज आ जाती है डोमेन 0 to पाई। ओके, तो आपने देखा रेंज इसकी यहाँ -1 to +1 थी। साइन के केस में इसमें भी -1 to +1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आपने देखा यहाँ इसका जो डोमेन था वो था आपका -1 to +1। ये इसकी रेंज, तो साइन इनवर्स -1 इज -π/2, π/2 ये इसकी रेंज भी आती है। ओके, इस केस में डोमेन इज -1 +1 एंड हियर इट इज 0 to पाई। ये दोनों रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में, तो साइन कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स डोमेन इज -1 to +1 इसका, और रेंज उसकी 0 to पाई। सेम यह डोमेन था, ये रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है, सेम। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, टेंजेंट के बारे में। व्हाट इज टेंजेंट हियर, और tan थीटा और समथिंग। नाउ इन दिस केस -π/2 +π/2, क्योंकि भाई इसी ग्रुप इस क्लास के अंदर ही इसकी वैल्यूज मैक्सिमम नहीं होती है। -π/2 पर tan -π/2 is -∞ and tan π/2 is +∞। सो -∞ to +∞ के बीच में सभी वैल्यूज इसकी लाई करती हैं। इन एंगल्स के बीच में ये डिफाइन होता है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, -∞ to +∞। इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, राइट, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही। इसकी जो वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स के सेट में आ जाती है। तो यहाँ ये रियल डोमेन इसका आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इसको आर से नोट कर देते हैं। ये जो आर यहाँ रेंज थी, ये इसकी डोमेन जाती है। इस केस में
फंक्शन सॉरी इसका रेंज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के केस में इनवर्स टेंजेंट का इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज माइनस पाई बाई 2 ये वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपका ये होगी। देन फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं जरा कोसेक इनवर्स की बात करती हूँ। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में आप देखते हैं और कोसेक सेकंड, लेट मी टेक कोसेकंड in case of cosecant, what are the values we can substitute here? Minus pi by 2 plus pi by 2, undoubtedly minus pi by 2 plus pi by 2, तो इस पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होती है, लेकिन इन्फिनिटी भी आती है। इस केस में जीरो इसका नहीं हो सकता, माइनस जीरो माइनस कर देते हैं, तो जीरो पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये इसका रेंज, इसका डोमेन है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, बट माइनस जीरो, बिकॉज माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बीच में ही जीरो लाई करता है। जीरो को आप माइनस कर देते तभी इसकी वैल्यू आ सकती है, जीरो इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि कोसेक जीरो इज 1 फ्रॉम साइन जीरो इज जीरो, 1 फ्रॉम जीरो इज नॉट डिफाइंड, फॉर दैट इट इज नॉट डिफाइंड, so it is infinity in that situation. Okay, in that situation this value is cosecant. Range is, what's the range of this? Range is r minus 1 and 1, because set of real numbers minus 1 and 1, तो ये दोनों वैल्यू पर माइनस 1 and 1 ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ओके, और में से आपने सेट ऑफ रियल नंबर सब हो सकते हैं, बट माइनस 1 and प्लस 1 ये वैल्यू में से माइनस करके नहीं हो सकती। ओके, ये इसका रेंज हो जाता है। सिमिलरली अब ये वैल्यू r माइनस 1 and प्लस 1 ये इसका डोमेन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और ये इसका रेंज, इसके इसमें रेंज है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 0, okay, minus pi by 2 to 0. All these values are there, or we can define cosecant theta equal to, let me take, इसका जो डोमेन है वो डोमेन हम डिफाइन करते हैं, इट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, लेट मी डिफाइन cosecant in other way. Cosecant can be defined, or tangent can be defined. Let me define tangent also in other way. What is that? That इसका जो डोमेन है वो हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, तो इनिशियली 90 डिग्री पर ये वैल्यू r माइनस x such that x is equal to twice n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z. Z is set of integers. Z is a set of integers. यहाँ पर set of integers है, तो इस तरह से आप डिफाइन करें। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसके टेंजेंट के केस में, टेन थीटा के केस में डोमेन इसका, तो रेंज क्या आएगी? और रेंज नेचुरली जो रेंज है इसकी, ओके, रेंज लेट मी राइट हियर, इसकी जो रेंज है क्या वैल्यू आती है इसके, इसमें आपने देखा कि 90 डिग्री मल्टीपल को हटा के, क्योंकि 10 90 इज इनफिनिटी नॉट डिफाइंड, 10 minus 90 is also not defined. Now multiple of 90 for that value, if I subtract from set of real numbers all these angles, multiple of this, here R is set of angles or real numbers. Okay, all those domain we have to define in case of cosecant. Okay, tangent, so where n belongs to this, and what is then is range here. Range of this will be set of real numbers. Range in case of tangent, okay, this is called domain. Range is R here. Just reverse of this, R in case of domain, in case of inverse trigonometric functions, and this definition, range is R minus x such that x equal to twice n plus 1 into pi by 2,
where n belongs to Z. Same. This is the range here. Range means whatever the angles will come here, the angles will be defined by this. Means all the angles except multiple of 90 pi by 2. Twice n odd multiple of pi by 2. That's in pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 6 pi by 2. Even negative values also minus pi by 2, minus 2 pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, etc. Okay, other than these multiple of 90 angles, all those angles which are falling in this category except pi by 2 multiple of pi by 2. Okay, odd multiple of pi by 2. This is odd multiple of pi by 2. The n belongs to that. This is the range here. Just reverse of this domain. This domain becomes a range for trigonometric, inverse trigonometric functions, and the set of real numbers is the range here. This range becomes domain in case of inverse trigonometric functions. Or in case of cosecant. Okay, in case of cosecant, let me write here. Cosecant. In case of cosecant, what is that? Its angles will be r minus x, such that x equal to n pi. Right one this one. N pi, if n is 0 for example, where n belongs to pi. Sorry, n belongs to z here. Again set of integers. Z is a set of integers. Z is a set of integers. Integers means 0, plus minus 1, plus minus 2, etc. Minus values other than 0, 0 also include. That is set of integers. Integers are plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, etc. Negative, positive, all the values, all the whole numbers. And 0 is also there. 0. If it is 0, for example, at 0, cosec theta is not defined. Because cosec 0 is 1 point sin 0, sin 0 is 0. 1.0 is not defined. Sin pi is 0. Similarly, cosec pi will be 1 point sin pi, that is 1.0 not defined. So n pi, multiple of n pi, so that cosec theta is not defined. So that those angles we have to subtract from set of real angles. Okay, set of real angles, or we set up all the angles here. This is the range of this. Okay, then what is the value of range in case of second? So range, let me write here range just below this, because this is taken the whole space here. So what is the range for cosecant? Let me change the marker here. Okay, so set of, in case of cosecant, it is r minus, let me write here, this is r minus, as I wrote down, minus 1 and plus 1, r